I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. So here is some kind of storm और यहाँ पे थोड़ा सा बारिश का माहौल बन रहा है, तो लाइट कभी भी जा सकता है. लाइट गए तो फिर अपना लाइव रुक जाएगा, बट जब तक नहीं जाता तब तक लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं. तो गुड इवनिंग टू ऑल. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to start again our industrial pharmacy. So from the pharmacology we have almost completed 95% syllabus, and from medicinal chemistry also important things we have already finished. I will take medicinal chemistry of your sulfonamides, penicillin, cephalosporins, that is remaining. After that we'll start industrial pharmacy, and that physical pharmacy and jurisprudence will try to complete, right? For analysis you can refer the previous year's video. All right, so industrial pharmacy, in that again one chapter is remaining known as the parenteral products or parenteral products or sterile products. So before that you should understand the different routes for administration, different parenteral routes for drug administration. So what are different parenteral routes? First of all, what do you mean by parenteral, para-enteral? So actually it is derived from the two names. Parenteral का मतलब क्या होता है? Parenteral का मतलब होता है other than enteron. So parenteral means what? Other than enteron. So it is made from two words, para and enteral. Para means other than, enteral means, enteron means intestine. So drugs which are given by other than intestine known as the parenteral routes. Even your inhalation route also comes under the parenteral routes, right? Your rectal routes also comes under the parenteral route. But parenteral routes normally refers to the drugs given by injectable routes, right? Different type of injections we used to give. So if you see the structure of skin, up the outermost layer is known as the epidermis. Below the epidermis you have dermis layer. After that there is a subcutaneous tissue. In that you have different sebum gland, sweat gland, etc., and fatty layer. After that subcutaneous adipose tissue are there, which is a lipid in nature, and after that there is a muscle and veins, right? So you have intradermal injection. Intradermal means injection that is given in the layers of skin, in the dermis of skin, that is intradermal, in the layers of skin or in the dermis of the skin. Subcutaneous means injection is given below the skin, in the subcutaneous tissue. Then intravenous injection means what? So injection is, a drug is injected into a vein, that should be intravenous injection. And drug, if it is injected in a muscle tissue or muscular tissue, known as intramuscular injection. Intramuscular injection, right? So if drug is injected into the stomach, known as intraperitoneal injection. इसको बोलते हैं intraperitoneal injection, right? So drug can be injected into the into the subarachnoid space, also known as intrathecal injection. Drug directly injected into the joints, known as articular injection. Drug injected directly into the heart, known as intracardiac injection. So there are different routes of administration, route of drug administration, but so these are mostly considered as a intraparental or parenteral routes. Okay. So we'll see. Now parenteral formulation means what? So in the parenteral formulation you will have a drug. Along with drug, some additives are there,
and mostly it is the injection. So that's why mostly it is the solution or maybe a suspension or emulsion. So injection may be either solution, a drug is dissolved in the vehicle along with some additives, preservatives, right? Or drug may be suspended in a finely divided solid suspension, that should have good syringe ability. तो एक suspension भी हो सकता है. And drug, if drug is lipid in nature, it can be dispersed into the another phase known as a emulsion, like micro emulsion, etc., right? So before that you should know how many, what is the volume of injection that can be given by different routes. So routes over here, then usual volume, type of medication administered, and formulation concentration. So primary parenteral routes, पहला है आपका primary parenteral routes, in that small volume parenterals. Small volume मतलब क्या, उनका वॉल्यूम कम रहेगा. So first is a subcutaneous injection. So you can inject 0.5 to 2 ml, 0.5 to 2 ml injection by subcutaneous route. So insulin injection is given by subcutaneous, vaccines are given by subcutaneous route, and almost all type of drug that can be given by subcutaneous route, है ना. यहाँ पे formulation concentration क्या होना चाहिए, it needed to be isotonic. The formulation need to be isotonic with the your blood plasma or body plasma, body fluids. Now intramuscular injection again a small volume parenteral में आता है, इसका वॉल्यूम कम होता है. स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल मीन्स है ना 0.5 to 25 ml, 0.5 to 15 ml और 0.5 to 25 ml in some books. Small volume parenteral. Large volume parenteral means more than 500 ml, more than 100 ml, 100 to 1000 ml, है ना, ऐसा large volume parenteral होता है. So intramuscular injection, you can inject intramuscularly around 0.5 ml to 2 ml. Nearly all type of drug that can be injected, even suspension can be injected. It can be solution, emulsion, है ना, or it can be a suspension. Large volume parenterals, volume of injection may be either 1 ml to 1000 ml. 1 ml to 1000 ml. 1 ml इंट्रावेनस में 1 ml भी आप इंजेक्ट कर सकते हो. लार्ज वॉल्यूम को बोलते हैं मोर देन 100 ml. That is known as a large volume parenterals. Nearly all kind of class that can be formulated in the LABP, large volume parenterals. So obviously the solution must be isotonic, and it can be given like a solution and sometimes emulsions, but suspension cannot be given by intravenous route. याद रखना है आपको. Now other parenteral routes, बाकी other parenteral routes कौन से, तो इंट्रा आर्टेरियल मतलब क्या है, डायरेक्टली इनटू द आर्टरी फॉर द इमीडिएट एक्शन इन पेरिफेरल एरिया. So in the artery you can inject around 2 to 20 ml drug. So it is intra-arterial injection. Artery में injection क्यों देना है, for the diagnosis, like radio-opaque media, then antineoplastic drug, anti-cancer drug can be given, antibiotics can be given. Again यहाँ पे solutions and some emulsions can be injected by intra-arterial route directly into artery, है ना. Then होता है intrathecal route, also known as the intraspinal route. So volume of injection, that is nothing but the intraspinal into the spinal canal 1 to 4 ml. Local anesthetic kind of drug, analgesic, neurolytic drugs must be isotonic. Isotonic होना चाहिए. Then है ना, then sub intraperidural into the epidural space of spinal cord, है ना. इसका थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे 6 to 30 ml. Again local anesthetic, narcotic analgesic, alpha agonist and steroids must be isotonic and isobaric with the CSF. Then intracisternal मतलब क्या, directly into the caudal region of brain,
बिटवीन द सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो डायरेक्टली ब्रेन में इंजेक्ट करना है। इसका एग्जांपल अभी तक है ही नहीं, क्योंकि ब्रेन में गए तो मर जाएगा ना वो, है ना। तो यहाँ पे 2 to 20 ml, है ना। देखो, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन directly into the joints. So 2 to 20 ml drug can be injected into the joint. So in case of arthritis and gout, so morphine, local anesthetic drug, NSAIDs, steroids, they can be injected into a joint. Must be isotonic again. Then होता है intracardial injection. Intracardial injection. So injection directly into the heart. So your adrenaline that is given by intracardiac route in case of heart failure. यहाँ पे 0.2 ml to 1 ml that can be injected. तो कौन से ड्रग देते हैं? कार्डियोटोनिक ड्रग्स एंड कैल्शियम. देन इंट्राप्लूरल मतलब क्या है? That is given in the pleural cavity of your lungs. So injected directly into the pleural cavity of lungs. So 2 to 30 ml volume of injection can be injected. And what type of drugs? Mostly local anesthetics, narcotic analgesic एंड एंटीबायोटिक. डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं 0.05 ml. तो इट शुड बी आइसोटोनिक. डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स ऑफ इंजेक्शन, देयर वॉल्यूम, टाइप ऑफ मेडिकेशन विद फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन. नाउ स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होता है और पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है? सो स्टेराइल प्रोडक्ट और पेरेंटल प्रोडक्ट, they are a kind of therapeutic agent that are free from all form of viable microorganism. So parenteral products are the formulation that are free from all viable form of microorganism. Viable form मतलब क्या है कि जिंदा, all kind of viable form. They are free from contamination. They are free from microorganism, all viable form of microorganism, including your pyrogens. So these type of products, they are known as a parenterals, and they includes parenteral products, ophthalmic products and irrigating solutions. तो sterile products कौन होते हैं? Sterile product मतलब the formulation from which all viable form of microorganism are absent. The product like your parenteral means injections, and ophthalmic product means product used with the eyes, and irrigating solutions. So all they are the sterile products, because they have circumvented highly efficient first line defense of the body, that is skin. क्योंकि क्या है कि ये जो इंजेक्शंस है, ये जो प्रोडक्ट्स है, आपको स्किन के अंदर मतलब circumvented, स्किन को पार करके आप उनको दे रहे हो. स्किन इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ योर बॉडी, सो यू आर bypassing the skin, so that must be sterile, because these products have circumvented highly efficient first line defense of your body, that is skin and mucous membrane. So therefore they must be free from microbial contamination and toxic component, and should possess a exceptionally high level of purity. तो आपको अगर डायरेक्टली आपके सिस्टम में कुछ इंजेक्ट करना है, that should be sterile, that should be pure, है ना. Parenteral preparation may be given by various routes like intravenous, intradermal, intramuscular, intraspinal, subcutaneous, intracardiac, like that. We have already seen. Now एक क्वेश्चन रिपीटेडली 2-3 बार आ चुका है. When injections are given by intravenous route, the bioavailability is 100%. The bioavailability is 100% when drug is given by intravenous route, because you are injecting drug directly into the systemic circulation. That's why, and there is no need of absorption distribution. तो absorption नहीं होगा. GIT में से absorption का सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि आपने ड्रग कहाँ पे इंजेक्ट किया? डायरेक्टली ना वेन. वेन में क्या है? डायरेक्टली क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में उलट जाएगा. तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज 100% वेन इट इज इंजेक्टेड इनटू वेन. याद रखना है आपको. Intravenous and intraspinal preparation are rarely given in the non-aqueous solution. तो इंट्रावेनस जो है और इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन जो है वो मोस्टली एक्वियस सॉल्यूशन ही होते हैं, बट कभी कभी
एक्सेप्शन है माइक्रो इमल्शन, कभी कभी इमल्शन भी हो सकते हैं, तो रेयरली गिवन ना, ऐसा नहीं कि गिवन नहीं। तो intravenous intraspinal injection, they are rarely given as a non-aqueous, but sometimes microemulsion can be given. Preparation है ना given intramuscularly, जो इंट्रामस्कुलरली है या सबक्यूटेनियसली इंट्राडर्मल, वो कैसे हो सकते हैं, वो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं, या इमल्शन भी हो सकते हैं, और इम्प्लांट के लिए सम पैलेट भी हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर intradermal route, that can be either a solution or suspension or emulsion, or even some pellets for the that can be transplanted subcutaneously or intramuscular. मतलब इंट्रावेनस इंट्राथिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सोल्यूशन, जो इंजेक्शन है, वो मोस्टली वाटर सोल्युबल होते हैं, मतलब एक्वियस होते हैं, कभी कभी रेयरली माइक्रो इमल्शन हो सकता है। बाकी इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, तो वो आपका सोल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, इमल्शन हो सकता है, समटाइम पेलेट भी हो सकते हैं फॉर इंट्राडर्मल ट्रांसप्लांट। ठीक है, नाउ एक्सिपिएंट यूज्ड इन द पेरेंटल प्रिपरेशन और पेरेंटल प्रोडक्ट, कौन से एक्सिपिएंट यूज करते हैं? जैसे टैबलेट में देखा है अपन ने, ये ड्रग अलॉन्ग विद द डाइल्यूएंट एंड बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, है ना, बाद में आपका फिलर है ना, बाद में आपका टेस्ट है ना, टेस्ट मतलब स्वीटनर है ना, ग्लाइडेंट है ना, लुब्रिकेंट है, तो ऐसे एडिटिव्स है। तो लाइकवाइज दैट एक्सिपिएंट यूज्ड इन द कमर्शियल पेरेंटल प्रोडक्ट, पहला है आपका एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्यों? बिकॉज इन द पेरेंटल फॉर्मुलेशन यू आर dissolving your drug into the solution, either vehicle में भी aqueous और oily, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ because of that हाइड्रोलिसिस हो सकता है ना, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एक तो ये रीजन हो गया है ना, वो एक दिक्कत है। एंड सेकंड, if you are formulating a large if you are formulating a small volume parenterals like ampules, ampules में तो नहीं होता, लेकिन like vials or ampules, so in that case there might be chance of contamination, so preservatives are used in the only vials, small volume parenterals. Preservatives are only added in the small volume parenterals. Only in a small volume parenterals. Antimicrobials are added in a only small volume parenterals, not in a large volume parenterals and terminally sterilized preparation. तो जो सिंगल डोज कंटेनर होता है या फिर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होता है, उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज नहीं करते, ऐड नहीं करते। इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। Now, what are the antimicrobial agents which are used as a, what are the preservative used as a used in the parental? तो यहाँ पे देखो बेंजील अल्कोहल, benzyl alcohol in a concentration of 0.5 to 10%, benzothium chloride 0.01%, then your butyl paraben 0.015%, chlorobutanol 0.25 to 0.5%, and metacresol 0.1 to 0.25%, methyl paraben again 0.01 to 0.018। के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी, कॉन्सेंट्रेशन है ना, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन है ना, मारिस्टिल, गामा, पिकोलिनिक एसिड और पिकोलिनियम 0.17% है ना। फिनॉल इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव और एंटीमाइक्रोबियल इन पेरेंटल, दैट इज 0.065 to 0.05, 0.065 to 0.5 फिनाइल माइक्रोबिक नाइट्रेट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। दिस इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक, concentration of 0.001 0.002। प्रोपाइल पैराबेन 0.0052 to 0.035, थायोमर्सिरल 0.001 to 0.02। तो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर ओनली एडेड इन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। यहाँ पे क्या रखना है, जैसे एम्पुल्स में नहीं होता है और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में नहीं होता है।
तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, तो आपको याद रखना है प्रिजर्वेटिव आर ओनली एडेड इन वायल्स, जैसे होता है ना वायल्स, तो एम्पुल एक होता है जिसमें 1 ml 2 ml और 5 ml का एम्पुल होता है ना, मोस्टली 1 ml 2 ml का ही होता है, 1 ml 0.5 ml 2 ml का एम्पुल हो सकता है। तो वो क्या है कि उसको ब्रेक करके जितना एम्पुल का कंटेंट है वो लेना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है। और वायल जो होते हैं, वायल में क्या है कि 15 ml टू 25 ml 30 ml तक भी वायल का हो सकता है, या 50 ml तक भी हो सकता है। उसमें क्या है कि यू हैव टू विड्रॉ डोसेज मल्टीपल टाइम्स, इससे होता है ना डाइक्लोवाइल डाइक्लोफेनाक वाइल 80 ml का है, तो 30 ml डाइक्लोफेनाक किसी को इंजेक्ट नहीं करेंगे आप, तो जैसे पेशेंट आता है पेन वाला, आप 1 ml 2 ml इंजेक्ट करेंगे, बाद में वो वायल रख देंगे, तो यू हैव टू यूज वायल फॉर लॉन्गर पीरियड, जैसे मान लीजिए फॉर 15 days 1 month है ना। तो इन दैट केस क्या होता है कि ड्यू टू continuous withdrawal of that solution, so there might be chance of getting contamination, so for to prevent that antimicrobial preservative is added. It is not added in a single dose container or large volume parenteral, याद रखना है। Now to enhance the solubility your drug है ना, if your drug is poorly soluble in the water or vehicle, तो है ना for injection mostly vehicle क्या होना चाहिए, for injections mostly the vehicle is nothing but the aqueous or oily vehicle, so aqueous vehicle is nothing but the water, so in that you have purified water or sterile water for injection है ना, and oily मतलब you have different oils, solubilizer, wetting agent and emulsifier, so they are also additives, so dimethyl acetamide 0.01 concentration, ductile sodium sulfosuccinate which is a surfactant in 0.015%, egg yolk, ethyl alcohol, ethyl lactate, glycerin, lecithin, polyethylene है ना, glycol 40, castor oil, PEG 300, polysorbate 80 40 20, povidone, propylene glycol, sodium dioxycholate, sodium sorbitan monopalmitate, so they all are used as a either solubilizer, wetting agent or emulsifying agent. Concentration, no need to remember the concentration, actually this table is given in the Leon Lackman in industrial pharmacy. buffers का क्या रोल होता है, buffers are used to maintain the pH of the solution, because pH is the important criteria, and you know that pH will alter the percentage ionization annihilation, so it is very important to maintain the pH of formulation in a particular range. To maintain that pH, buffers are used. What are buffers? When buffers are nothing but they are the weak acid and their salt with the weak acid and their salt, they will raise the pH change upon the addition of small amount of acid or base. So acetic acid, adipic acid, benzoic acid, sodium benzoate, citric acid, lactic acid, malic acid, potassium phosphate, sodium phosphate monobasic dibasic, sodium acetate, sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium citrate, tartrate, tartric acid, all they are used as a buffer or buffering agents, right, to maintain the adequate pH. pH will is very important, क्योंकि pH में क्या है कि pH अगर कम ज़्यादा हो गया फॉर्मुलेशन का डिटोरिएशन भी हो सकता है ना। टू मेंटेन द pH buffers are used. bulking agent or tonicity modifier, to enhance the bulkness or to enhance the volume, to increase the volume or to modify the tonicity. As a glycerin is a bulking agent, lactoglycerin, lactose, mannitol, all they are the bulking agent. Dextrose is also there. Sodium chloride is a tonicity modifier. Sodium sulfate, sorbitol, they are a bulking agent. Suspending agent, अगर आपका ड्रग insoluble है, सस्पेंशन में फॉर्मुलेशन करना चाहते हो, in that case gelatin, methyl cellulose, pectin, polyethylene glycol 4000, they are the suspending agent.
है ना. These are the additives used in the parenteral formulation. बाकी देखो अभी chelating agent. If your formulation is unstable towards the metals, उसमें EDTA डाइसोडियम और EDTA कैल्शियम डाइसोडियम, कैल्शियम EDTA और सोडियम EDTA और EDTA टेट्रासोडियम. Local anesthetic to prevent the pain at the site.